Okay, so now we will be starting with methods of measuring national income. And there are three methods of measuring national income. The first method is your income method. The second method is expenditure method. And the third method is called your value added method. Yes, ma'am. So I will be explaining each of the methods, and after each method, I will be covering one numerical each, which will explain the whole concept at large. Now, what is your income method? Now, when we talk about income method, we are actually talking about कि जो factor income कितना है, ठीक है? What is the income earned by the factors of production? So income method here talks about factor income. And to find out the factor income, which aggregate gives you the domestic factor income? If NDPFC, that is net domestic product at factor cost, gives you the sum total of factor income of all factors of production in the domestic territory. Okay, you need not write it because I will be sharing the PDF of notes, so you will be saving your time. And now, if I have to find out national income, we know that national income is also called NNPFC. And through income method, if I find out NDPFC, can I convert it to NNPFC? Can NDPFC Yes, be ma'am. converted to NNPFC? Yes, it can be converted because N is same, Domestic method. PNFC is same here. Only we have to convert domestic to your national. Okay. So when we add Yes, NFIA, net factor income from abroad, we will get NNPFC. And this NNPFC is the national income. Okay. Now, the question is how to find out NDPFC. Okay. So by using income method, I have made short form. In the book, it is given in a very elongated version, but I have made it in very short and crisp thing. You have to remember certain, I've just put some memory technique and you just need to remember that memory technique. So to find out NDPFC by using income method, you will have to add 5 components. So NDPFC, you know what are the factors of production? Can you tell me? factors Land, of production, yes, land, building, labor, land, labor, capital, and rent. entrepreneur. Yes. So these are the various Uh, factors of production. Now, what will be the income of them? So I have put it in 5 aggregates here. Okay, I will call it as prime so that it is easy for you to remember. Now, what is prime? P stands for profits. yes, ma'am. R stands for rent and royalty. I stands for interest. M stands for mixed income. And E stands for compensation of employees. In book, elongated formula is given. I have kind of made it in a very easy technique for you to learn. And
This E stands here for employees. So if you remember employees, you will remember compensation of employees. Okay. Now there are certain things which you have to understand. Under profits, what all things will be given. If profit is not given in the question, the other words for profits which might be given is dividends. Okay. Then retained earnings. You know na, that retained earnings are also the part of company's profits. So retained earnings and corporate tax. Yes, ma'am. तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रॉफिट्स नहीं दिया होगा बट डिविडेंड इज गिवन रिटेन्ड अर्निंग इज गिवन कॉर्पोरेट टैक्सेस आर गिवन देन यू विल ऐड ऑल दीज आइटम्स टू फाइंड आउट द प्रॉफिट या तो फिर प्रॉफिट डायरेक्टली दिया होगा क्वेश्चन में इज दिस पार्ट क्लियर Yes, ma'am. ओके सो प्रॉफिट्स के अंदर ये सब हो सकता है देन रेंट एंड रॉयल्टी के अंदर कुछ नहीं है इंटरेस्ट के अंदर कुछ नहीं है दैट विल बी डायरेक्टली गिवन मिक्स्ड इनकम will be directly given. Then under compensation of employees, what are the various things which can be given to you other than compensation of employees? Wages and salaries in cash. Then next is your employees, sorry, wages and salaries in kind. Then you have employees contribution to social scheme. एग्जाम में जनरली ये वर्ड दिया रहेगा compensation of employees. But if suppose this word compensation of employees is not given, they might use another terms like wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, employees contribution to social schemes. तो नाम पता होने से याद आ जाएगा that these are the part of compensation of employees. Okay, Okay, ma'am. यहाँ तक क्लियर है. हाँ. तो जब हम ये ऐड करेंगे प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें क्या मिलेगा एनडीपी एट एफसी. एनडीपी एट एफसी क्या है वंस अगेन आई विल रिपीट दिस इज द sum total of factor income of all the factors of production in the domestic territory. Okay, but हाँ. to find out NNPFC, now what is NNPFC? National income. To find out national income, we have to add NDPFC plus to convert domestic to national, we have to add NFIA. क्या है NFIA? Net factor income from abroad. Abroad. Okay. Now one more thing. Sometimes profit plus rent plus rent and royalty plus interest. This three component profit plus rent plus royalty plus interest PRI. ठीक है PRI ये तीनों को कंबाइन करके दे कैन गिव द वर्ड एज ऑपरेटिंग सरप्लस. दे कैन यूज द वर्ड ऑपरेटिंग सरप्लस. तो घबराना मत अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है क्वेश्चन में देन ऑपरेटिंग सरप्लस इज नथिंग बट P plus R plus I. Okay, so Yes, ma'am. yeah, so this particular in the book it is given in an elongated version. I have reduced it and I have now put it here as a very crisp thing. Now with this we can solve one question. So let's do the question. Again, you need not copy anything here. Read the question. What have they given? Just giving Calculate you gross national product at market price from the following data. yeah. They have asked you to calculate
GNP from the following data. तो कुछ भी aggregate they have asked you to find out, you can actually find out because you know how to convert each the different aggregates from the various thing from the following data by using Yes, income ma'am. method. By using income method. One more thing I want to add, by using income method. Now, how will you identify in the question कि income method से करना है कि expenditure method से करना है कि value added method से करना है? First thing is that you will look at the question. अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा है कि इनकम मेथड से करना है एक्सपेंडिचर मेथड से करना है तब तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कि इनकम मेथड से करना है एक्सपेंडिचर मेथड से करना है या वैल्यू एडेड मेथड से करना है, देन यू विल लुक एट द कंपोनेंट्स. देन यू विल लुक एट द कंपोनेंट्स कि किस चीज का कंपोनेंट ज्यादा दिया हुआ है. ठीक है. सो Yes, ma'am. नाउ हियर यू कैन लुक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. हमें रेंट दिया हुआ है, हमें डिविडेंड दिया हुआ है, हमें मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें कॉम्पनसेशन फॉर एम्प्लॉयज दिया हुआ है. ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन. तो हमारा प्राइम का सारा चीज है, प्रॉफिट सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है. सो हियर Yes, इवन इफ द क्वेश्चन इज नॉट मेंशन दैट यू हैव टू सॉल्व इट यूजिंग इनकम मेथड, यू कैन एक्चुअली टेक इनकम मेथड एंड get the following, you can solve the whole thing. Now they are asking you to find out GNP. Okay. So now by using income method, of calculating, what can we find out? NDPFC. अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था प्राइम इज ऑल डोमेस्टिक इनकम. एनडीपीएफसी क्या है? एनडीपीएफसी इज डोमेस्टिक इनकम. एंड डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें प्राइम चाहिए. P प्लस R प्लस I प्लस M प्लस E, where P is profits, R is rent and royalty, I is your interest, M is your mixed income, and E is your compensation for employees. Clear? yes, ma'am. Okay. So now we will be solving the question. Look at the question. Net indirect taxes. Right now we don't need it, just keep it. Depreciation is given. Net factor income from abroad is given. We need prime. हमें P prime चाहिए. So rent, R component मिल गया हमें. Yes, ma'am. Dividend, अभी मैंने दिखाया था, अगर डिविडेंड दिया हुआ है तो डिविडेंड कम्स अंडर व्हाट? प्रॉफिट्स. Profit. है ना. प्रॉफिट अगर डायरेक्टली Yes, नहीं दिया होगा देन यू हैव टू लुक फॉर द वर्ड डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस. ये तीनों को हम ऐड कर देंगे अगर ये तीनों है. अगर इसमें से कोई एक है तो हम उसी को लेंगे प्रॉफिट्स में. तो नाउ कमिंग टू द okay, क्वेश्चन ma'am. हियर. डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. देन मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम अपने आप में कंपोनेंट है, एम कंपोनेंट है. सेविंग ऑफ हाँ. प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, कोई मतलब नहीं है. दे हैव जस्ट गिवन टू कंफ्यूज यू. दिस इज फॉर अदर मेथड. देन वी हैव I. इंटरेस्ट. आई कंपोनेंट मिल गया हमें. एंड हाँ. compensation of employees, we got the E component. With this we can हाँ. solve our question. So now Yes, here ma'am. what are we finding out? We are finding out by using income method. और हम जब भी income method use करेंगे तो हमें NDPFC आएगा. ठीक है. प्राइम जब भी हम निकालेंगे तो हमारा NDPFC ही आएगा because that is the net domestic product at factor cost. So now here, one second, retained earning is not given. Okay. देखो, they have not used the word retained earning directly here. They have given savings of private corporate sector. Saving of private corporate sector is nothing but retained earning. एक private company, if they are not giving out dividends, but they are saving it in their general reserves or whatever as a retained earning. So this savings of private corporate sector is nothing but retained earnings. Okay, ma'am. Retained earnings. So this again, now where does retained earning come?
PRIME किस में आता है? P में. P में आता है. Once again I will show you. Profits, dividend. प्रॉफिट्स अगर डायरेक्टली दिया है तो ठीक है, नहीं तो डिविडेंड हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग हो सकता है, या कॉर्पोरेट टैक्सेस होता है. और अगर ये तीनों है तो हम तीनों को ऐड करेंगे. ओके. Okay, सो ma'am. नाउ वी कैन सॉल्व दिस हियर. NDPFC is equals to P plus R plus I plus M plus E. सो हमारे प्रॉफिट्स में क्या क्या दिया हुआ है? दो चीजें दी हुई हैं. डिविडेंड दिया हुआ है और रिटेन्ड अर्निंग दिया हुआ है. सो डिविडेंड इज हाउ मच? 500. एंड डिविडेंड इज गिवन 500. एंड देन Yes, ma'am. रिटेन्ड अर्निंग इज गिवन एज 400. सो हमें मिल गया पी में 500 900. प्लस 400. ये है डिविडेंड और ये है रिटेन्ड अर्निंग्स का. प्लस आर. आर है हमारा डायरेक्टली रेंट 1000 and interest is 200. So 1000 plus 200 plus M. M हमने लिख लिया है. Mixed income 200. And the next one last is E, compensation of employees 100. So I can easily get NDP at FC. If you total up, how much will you get? 500 plus 400 is 900. 900, 1000, 1900, 2100, 2300 and 100, 2400. So 2400 crores. Okay. Since the data, okay, forgot. The data is in crores. Okay. Easy. Yes, ma'am. So now what I have to find out? Question में क्या पूछा है हमसे? GNP. The question has asked me to find out GNP. One second. The question has asked me to find out GNP. But what I have got right now by using income method, NDP, sorry. मैंने क्या निकाला है अभी? NDP at FC, factor cost. So now we know कि left hand side is the unknown variable and right hand side is what we know. Now let's start. नेट को ग्रॉस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? We need to add depreciation. Yes, ma'am. Okay. Then डोमेस्टिक को नेशनल में करने के लिए क्या करना NFI. पड़ता है? We have to Plus add NFI. NFIA. Then PP is same. फिक्स्ड कॉस्ट को मार्केट प्राइस में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? We have to add. Direct taxes. Yes, we have to add net indirect taxes. So Or here minus we, subsidy. yeah, net indirect taxes minus subsidies अलग से नहीं करना है. Net indirect हाँ, उसी taxes is indirect taxes minus subsidies. ठीक है? Remember, Yes. नेट Yes, इनडायरेक्ट ma'am. टैक्सेस दिया है तो उसमें माइनस सब्सिडीज नहीं करना है. इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज अगर अलग अलग से दिया हुआ है तब हमें माइनस करके इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस करके तब एनआईटी लिखना है. इज दैट ओके? सो नाउ वी कैन फाइंड Okay, आउट. ma'am. यस. सो नाउ वी कैन फाइंड आउट. इट्स इजी. एनडीपीएफसी हमें ऑलरेडी पता है. इट इज 2400 crores प्लस डेप्रिसिएशन. लुक एट द क्वेश्चन. Depreciation is given to us as 400 and net indirect taxes is given to us as 900. So depreciation plus 400 and 1 second. Depreciation is given as 400, net indirect taxes is given as 900. So NFIA find out कर लेते हैं. Net NFIA. So this is done, this is done. Net factor income from abroad is given as minus 20. So minus 20. ठीक है? Yes, ma'am. So now
Your answer will be how much? 2,800 minus 20 plus 900. So you will get 3,000, or you can just add 2,400 plus 400, 2,800. 2,800 plus 900 will be 2,000, sorry, 3,700. 3,700 minus 20 will be 3,680 crores. And this is your answer. So conclude by writing, therefore, GNPMP is equals to rupees 3,680 crores. Any doubt? No, ma'am. All clear? Yes, ma'am. Okay. Now moving to the second concept or the second method,